अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुंबल चौधरी। तो वी होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं, वो बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो है। वीडियो का नेम है H&M इन बांग्लादेश। काफ़ी फेमस ब्रांड है ये क्लोथिंग का, तो बांग्लादेश में इसकी फैक्ट्री है आई थिंक, तो इस पे हम रिएक्ट करेंगे। हाँ, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो ये इस वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है कि शायद इसके बारे में दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन कैसे हुई बांग्लादेश में फैक्ट्री की, और जो वहाँ पे काम हो रहा है पूरी प्रोडक्शन जो है वो मे बी इसमें दिखाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। H&M wants to make a positive contribution to the world. As a long-term buyer in the textile industry and seller in many markets, H&M contributes to international trade. Trade is particularly important for developing countries to take part in, as the jobs, growth and development it brings help lift people out of poverty. The textile industry is, according to the United Nations Development Programme, an industry well suited to create such progress. Textile is one of the key economic sectors for us in Bangladesh because it brings almost 80% of our foreign currency and employs more than 4 million people. H&M has been a great partner for us in our initiatives towards sustainability and growth. The majority of the people working in the textile industry in Bangladesh today are women. UN Women states that promoting women's access to economic opportunities contributes to gender equality. 5.5 বছর ধরে এখানে কাজ করছি। আমি যখন গ্রামের বাড়িতে আসছি তখন আমি গরিব ছিলাম, এখানে হেল্পার হিসাবে ঢুকছি, পরে প্রমোশন পেয়ে অপারেটর হিসাবে বেতন পাচ্ছি। পরে আমার এই যে সুন্দর আরও আমার জীবন পাল্টে গেল। আমার ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়ালেখা করাচ্ছি, আর আমার ছেলে চাই সে ডাক্তার হবে। This has an impact on overall labour productivity in the economy and on children's health and well-being within the family, and hence the well-being of the next generation. H&M doesn't own any factories but works with independent suppliers, who all have to meet H&M's sustainability commitment and code of ethics. In 2015, we did over 3,500 audits and assessments in our suppliers' factories. All 265 manufacturing factories in Bangladesh producing for us has undergone the Accord, building and safety inspections. H&M also provide training on workers' rights to worker and management. 80% of all our suppliers' factories in Bangladesh have so far participated. Moreover, H&M helps suppliers establish democratically elected workplace committees and improve the dialogue between management and employees. We want to contribute to improvements for the people working in the clothing industry in Bangladesh, and that's why since many years back we have invested a lot of resources to improve the Bangladeshi textile industry. And to take responsibility is a very important part in the total customer offering for us. When it comes to the workers' wages, our standpoint is clear, and that is that we support the workers' demand for higher wages. And during my visit now to Bangladesh, I met with the Prime Minister, Sheikh Hasina, and where we put forward our demand for higher minimum wages and an annual review of the minimum salary. H&M is also working to ensure that its own purchasing practices enable suppliers to meet H&M's sustainability standards. For example, by striving to provide long-term business relation, reasonable lead times, fair pricing, timely payments, and transparent communication. H&M works for fair living wages, being paid by all suppliers across the entire textile industry.
H&M is the first fashion company to have developed a global strategy for a fair living wage, being paid by all our commercial goods supplier. One important part of the strategy is implementing a fair wage method, which was first piloted in a small number of selected suppliers' factories. The result was positive, and the method is now scaled up to a bigger amount of strategic suppliers' factories in several of our sourcing market. Skills development is key for workers to increase their wages. Providing skills training is part of the work to strengthen workers and help develop the textile industry. H&M started its training center in 1999 to train the helpers and fresh people and to make sure that they get skills and work as operators in the factory. The way I see H&M, they're committed to continue this. H&M has been a great strategic partner supporting us in all the positive initiatives. And not only in Bangladesh, H&M also partnered with us in our work in Vietnam and Cambodia in our Better Work program. H&M welcomes more partnerships and is hopeful that by joining forces, it can contribute to long-term positive development in the textile industry. For more information about H&M's social sustainability work in the supply chain, please visit hm.com/conscious. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, और जो सबसे अमेजिंग चीज़ जो हमेशा बांग्लादेश की वीडियो में नज़र आती है कि बहुत सारी जो फ़ीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, काम करती हैं घरों से बाहर निकल के। एजुकेशन में भी फ़ीमेल्स की जो है वो तादाद ज़्यादा है, और वर्किंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो और वो जो दिखा रहे थे डेनिम की जो जीन्स बन रही थी, तो फर्स्ट टाइम आज देखा कि वो स्प्रे भी होती है और फिर कटिंग हो रही थी, इसको टैग लग रहे थे और बटन लगा रही थी मशीन से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इतना बड़ा ब्रांड है, बांग्लादेश में उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जी तो गाइस, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। जिस तरह वो दिखा रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ से पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद जो गरीब लोग आए हुए हैं दूर दूर से, वो बता रही थी एक लेडी कि मैं अब काफ़ी अच्छी सर्वाइव कर रही हूँ, अच्छी मेरी सैलरी है, मैं अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में भेज रही हूँ। हेल्पर थी और फिर उन्होंने प्रमोट कर, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ ही ट्रेनिंग हो रही है। और सैलरी का भी वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से ख़ुद वो मिले हैं, CEO जो थे H&M के, और उन्होंने सैलरी का भी बोला है कि सैलरीज अच्छी होनी चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में सैलरीज बहुत कम होती हैं, तो इस पे भी काम हो रहा है, बड़ा अच्छा लगा। और ये ब्रांड टॉप लेवल का ब्रांड है दुनिया का, ये बांग्लादेश में, ये भी सुन के बड़ी खुशी होती है। तो उम्मीद करते हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान मिल के टेक्सटाइल सेक्टर में आगे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये टॉप के टेक्सटाइल सेक्टर के जो है ना ये खिलाड़ी हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से हम दोनों तरक्की करते रहें, और बांग्लादेश में भी और फैक्ट्रीज लगती रहें और हमारे यहाँ भी लगें। जी बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और ये जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, और जो है ये बांग्लादेश में है, इस देखकर तो बड़ा अच्छा लगा। और सारे जिस तरह से वो काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा उनमें गरीब भी थे, उनकी अच्छी सैलरीज थी, और वो एक बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो मुझे तो ये देख के सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से जो है वो अच्छी फैक्ट्रीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, हर जगह, ताकि गरीब लोगों की भी हेल्प हो जाए, और जो है अच्छी सैलरीज़ वो दे रहे हैं तो उनको भी जो है इसमें फ़ायदा हो जाए। हाँ, एक जो पॉइंट मैंने नोटिस किया, जो भी वीडियो हम देख रहे हैं बांग्लादेश की, तो फीमेल्स काफ़ी तादाद में वो काम कर रही हैं, ठीक है, 80% 90% टेक्सटाइल सेक्टर में भी, तो फीमेल्स मिल के साथ काम कर रही हैं। यही बांग्लादेश की तरक्की का राज है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी फीमेल्स को काम करना चाहिए, ताकि दोनों मिल के काम करेंगे तभी जाके इकॉनमी हमारी ग्रो करेगी। तो ये पॉइंट बांग्लादेश का बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। तो वी होप सो कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और आप लोगों को जो वीडियो देखनी हो नीचे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर दिया करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।